Hello students, this is video number 5 and today's topic is composite function. So first of all, meaning of composite function. So let's take two functions. First function is f of x and second function is g of x. So the function f of x is defined by x square plus 2 and the function is defined by g of x is defined by sine of x. Okay, you can compose these two functions with the two ways. First way is fog, or you can say f composition of g, or and second way is g composition of f. Okay, you can read as fog and goff. Okay, so you can also solve this composition when you write fog of x. Okay, so you can write this composition as f g of x. Okay, so this time you have to read this function as your x. So your function become what? F of x, and f of x is given by x square plus 2. It means this function is x square plus 2, but you have to replace your x by g of x. So your function become g of x whole square, g of x whole square plus 2. And what is your g of x? G of x is given by sine of x. So your this composition f composition g of x is given by sine square of x plus 2. Okay, and you can also describe the composition function this also in the same procedure. This is g f of x. Okay, so this time you have to consider this f of x as x. So your function become g of x, and g of x is given by sine of x. So this will your composition function, and this is sine. This is g of x. So sine f of x. Okay, sine f of x. So f of x is what? F of x is sine x square plus 2. Okay, so for example, if we take third function, okay, so if we take third function, for example, we take h of x is equal to mod of x. So what is h of g of x? Okay, you can write like this. So again you have to consider this g of x as x. Your function become h of x, and h of x is given by mod of x. So you have to write this g of x, mod of g of x, and g of x is what? Mod of sine of x. Okay, and next this f composition of h. Okay, so you can also write this. So now again students, you have to consider this h of x as x. Your function become f of x, and f of x is equal to what? X square plus 2. So what is here x? X is, you just have to replace x by h of x. So what is this? Hx ka square plus 2. So what is h of x? H of x is mod of x whole square plus this. So this is equals to what? H of x ka square, students. Mod of 3 equals to 3, so mod of x gives you x. So you can write here x square plus 2. So what is h square plus 2? H square of 2 is what? Is your f of x. So this is also your f of x. So you can write or you can say when two composition, when you composite two function, so you will get a function. Okay, now let's talk about the domain and codomain when we compose two function. For example, if we have a function this f such that a to b, and we have a function g such that b to a, b to c, sorry, and this function is defined by f of x. Suppose this function is defined by 2 of x, and suppose that this function is defined by what? X plus 5. Okay, so you have to find out what is a domain and codomain when we compose two functions. Okay, so first of all you have to take three sets. This set is a, b and c. Okay, and you know that when I'll talk about this function has a domain and a codomain, and this a is your domain and b is your codomain. Okay, or you can say this b as a range also, and in this function your b is a domain and c is a codomain. So students,
listen to me very carefully. When I talk about this function, here B is your codomain. But when I talk about this function G, here B is your domain. Okay, so let's start with the mapping. For example, if you take some elements in your non-empty set A, for example, if you take 1, 2, 3 and 4, and your function is from A to B. So for example, it's your function this f and it's defined by 2 of x. So just by putting or we can say or substituting this element one by one in function, so we'll get your domain. Okay, we will get your codomain. So what when you will put x equals to 1, you will get 2, you will get 4, you will get 6 and 8. Okay, so these are the mapping like this. These are the mapping for the function A to B. And when I'll talk about this function G, so listen students, here B is the domain and C is the codomain. Okay, so now B is the domain, so you just have to substitute the elements from your domain in the given equation. So you just have to substitute. For example, if you substitute x equals to 2, so you will get 7, 4 you will get 9, then 11, then 13. So here is the mapping like this. Okay, so I repeat, this f of x and this g of x. One thing student, please notice that these two, both x have a different meaning. Different meaning for what? This x, when I'll talk about f of x, this x is the domain for f, and when I'll talk about this x is a domain for your function G. Okay, so now you have to find out the domain and codomain when we composite a function. So let's composite a function. For example, if you composite two function G composite f, so what will you get? I repeat, this will equals to f of x. Okay, and again you have to consider this f of x as your x, so the functions become g of x, and g of x equals to what? X plus 5. X plus 5 means f of x plus 5. You just have to replace your x by f of x, and your f of x is what? Your f of x is 2x plus 5. Okay, so you will get a new composite function, or you can say function is defined by 2x plus 5. Okay, so this is a composition. Okay, so what is the domain and codomain? Students, listen to me very carefully. आपके पास जो ये फंक्शन है g ऑफ f, इसमें जो ये f है, अगर आप इस f का फंक्शन देखोगे तो f का फंक्शन क्या है? a से b, मतलब डोमेन से कोडोमेन की तरफ. इट मीन्स जो आप यहाँ पे दो सेट्स अभी बनाएंगे, आपको मैपिंग देखनी है. ओके, डोमेन और कोडोमेन का बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है. तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए f के साथ कौन सा है यहाँ पे एलिमेंट x, और जब मैं f की बात करूँ तो x किस में था? जब आपने यहाँ पे a लिखा था. इट मीन्स यहाँ पे कौन से प्रेजेंट एलिमेंट्स कौन से आएंगे? जो a में प्रेजेंट है, और a में क्या प्रेजेंट है? डैट इज 1, 2, 3 and 4. Okay, and by substituting one by one element from your set A, you will get your codomain element. If you substitute 1 in this, you will get 7, you will get 9, 11 and 13. So this is a mapping like this, and student, this is clearly what? This is clearly a set C. So you can say that this composition function is mapped like A, because जब यहाँ पे f लिखा होगा, f means function starting from domain, and कौन सा function start हुआ है डोमेन से? A का. कहाँ तक? G के कोडोमेन तक, और वो अभी आपने for this example आपने प्रूव कर लिया. अब आपको उसको बार बार प्रूव करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको इस बात का याद रखना है. ओके, सो इट मीन्स दिस फंक्शन इज वैलिड. बट इफ आई टॉक अबाउट the function, the composite function f composition of g. So मैं इसे कैसे करूँगी अब आगे? नेक्स्ट f g of x. तो अब क्या करा जाए? अगेन इस g of x को आपने कंसिडर करना है as your x. You will get f of x, and f of x is what? 2 of x. So you will write 2g of x, and g of x is what? 2x plus 5. सो आपको क्या मिल गया? 2x plus 10 मिल गया. नाउ आपको देखना है कि ऐसा डोमेन क्या है, और ये फंक्शन वैलिड होना चाहिए पहले उसके लिए, बिकॉज ये फंक्शन वैलिड था, पहले आपको चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल
अगेन मैं बात करती हूँ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, एफ से जी तक। अगेन स्टूडेंट बात को ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स, इट मीन्स जी मैपिंग क्या है, जी मैपिंग है बी टू सी। इट मीन्स ये एक्स किस में है, इस बी में, और बी यहाँ पे क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स कौन से है, 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2 4 6 और 8। दिस इज योर एलिमेंट वर्ड, दिस इज योर बी। अब आपको निकालना है क्या है, कोडोमेन। कैसे निकालते हैं, वन बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम योर सेट बी। यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट इन दिस, जो आपका फंक्शन आपने डिफाइन किया है। सो जस्ट सब्सटीट्यूट इन दिस, 2 × 2 4, 4 + 10 14, बट 14 वी डोंट हैव एनी 14 एज अ कोडोमेन। जस्ट सी, here is your codomain, यहाँ पे कोई आपके पास 14 नंबर नहीं है, so it means this is not a valid function, this is not a valid function. Okay students, so here's your question. First you have a function f, you have a function g. So when you can see that ये function, ये आपके elements है 2 3 4 and 5, this is your domain and this is your codomain, and again for f this is your domain, this is your codomain. Students आपके पास given है यहाँ पे कि फंक्शन 2, अगर फंक्शन का डोमेन 2 है तो इसका कोडोमेन 3 है। अगर आप यहाँ से एलिमेंट 3 ले रहे हैं तो इसका ये इमेज है 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 9। आपको यहाँ पे क्लियरली बताया है। सेम आप इसकी भी इमेज देख सकते हैं। जी ऑफ 3 की इमेज 7 है एंड जी ऑफ 4 की इमेज भी 7 है। मैं बता दूँ ये आपस में इक्वल है। आपको इसमें फाइंड करना है जी कंपोजिशन ऑफ एफ। बहुत ईजी है इसको फाइंड करना। कैसे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। तो लिखिए जी ऑफ एफ। ओके, आपको मैंने अभी बताया था एफ के साथ कौन से एलिमेंट है जो आपके एफ फंक्शन के डोमेन में होते हैं, बट आप इसे लिखते कैसे, जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ओके, सो अब मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि लाइक जी ऑफ एक्स, बिकॉज आपके पास बहुत सारे नंबर है। तो अब नंबर को कैसे हम निकाल सकते हैं, बाय सब्सटीट्यूटिंग 1 by 1 सिलेक्टेड फ्रॉम योर डोमेन by your function f. So you can see that your codomain. Okay, so first of all here is the x. ये x क्या है, this is the x selected from the function f, and this is your domain. So by substituting 1 by 1, for example x is equal to 2, so you will get f of 2. And what is f of 2? f of 2 is given by 3. So student, g of 3 is equal to what? g of 3 is equal to 7. Okay, so next देखते जाइए अब, g f of 3. Okay, so what is f of 3? f of 3 is given by 4 and g of 4 is equal to what? 7. Again g f of 4, f of 4 is equal to what? 5 and g of 5 gives you 7. Then next g f of 5 gives you what? g 9 and g of 9 gives you 15. So students, this means that g composition of f. अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे f के साथ, x के, और x में कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 5। और आप ऐसे भी देख सकते हो लाइक 3, this is not 2 3 4 and 5, so 2 3 4 and 5। ये क्या है आपका डोमेन एंड कोडोमेन, जो आपकी इमेजेस बनी हैं, दैट इज 7 7 इज कॉमन, देन यू कैन राइट 1 7 11 एंड 15। तो आप क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ से एक बार फिर देख सकते हैं, जब मैंने जी ऑफ एफ किया है, एफ के साथ मतलब एफ का डोमेन से लेकर जी के कोडोमेन तक। ओके, so your next question is, show that a function, you have a function from a real value to real values, real numbers to real number, and student मैंने आपको पहले भी बताया था कि r - 7/5 का मतलब होता है रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5. ओके, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, एंड you have one more function, that is g from a real number to real number, and is defined by g of x. Then you have to prove that, you just have to show that f of g means fog is equals to ia and gof is equals to ib. So what is I is called identity function. आइडेंटिटी मीन्स अपनी पहचान। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन है, अगर आप इसमें कोई भी एलिमेंट रखते हो, अगर आपको उसके रिजल्ट में वही एलिमेंट मिल जाता है, मीन्स उसकी पहचान, उसका शेडो अगर आपको मिल जाता है, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन इन ए सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट।
you have a function, clearly student, you have a function from this, and this r minus 7 upon 5 is equals to what? Is equals to b. So clearly your function from b to function, and ये क्या है आपका a, and you have a function g also from a to function b. Okay students, so you have to find what, like you have to find fog and gov is equal to identity function. So let's start. So आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम fog निकालते हैं, fog of x, आपको पता है इससे क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप अगेन बार बार आपको बता रही हूँ, दिस इज जी ऑफ एफ. ओके, एंड आप कैसे पढ़ते हो उसको, आपको उसको कंसीडर करना पड़ता है एज योर एक्स. सो आप इसे ऐसे पढ़ते हो कि एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे इक्वेशन डेफिनेशन गिवन है. तो आप कैसे बोलेंगे, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस एक्स बाय जी ऑफ एक्स. सो योर डेफिनेशंस बिकम एक्स जी ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन 5 जी ऑफ एक्स माइनस 7. ओके, एंड आपके पास जी ऑफ एक्स की भी डेफिनेशन गिवन है, फंक्शन आपको डिफाइंड है. सॉरी, जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो डिफाइंड है. वो क्या डिफाइन है, जी ऑफ एक्स मीन्स 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5, एंड हियर इज ऑल्सो 7x. सो आपने बस इसको सिंपली सॉल्व करना है. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर लूँगी. हियर इज 21x plus 12 20x and this is 12. ओके, सो इसे जब एलसीएम होगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो मैं सिर्फ ऊपर की न्यूमरेटर की वैल्यूज़ लिख रही हूँ. एंड दिस इज 35x 20 and this is 35 this, and this is 21. Okay, so there plus minus cut, there is a plus minus cut. So what will you have, you have 41x upon 41. So student, this is clearly आपने क्या किया था अपने कंपोजिट फंक्शन में, आपने जो एलिमेंट लिया था आपको वही एलिमेंट मिल गया. सो क्लियरली this is an identity function. Similarly you can also prove that gov of x is equal to x. एंड आपको पता है ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ से, आपको पता है मैंने डायरेक्टली कर दिया है. ठीक है, अपॉन की वैल्यूज मैंने डायरेक्टली कट कर दिया, ये सीधा एलसीएम किया है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस नोट को देखिए पहले, देन बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. इस नोट को ध्यान में रखिए, ये आपकी एक ट्रिक रहेगी. अगर आपके पास कोई कंपोजिट फंक्शन है जी कंपोजिशन ऑफ एफ, अगर वो 1 है तो इसमें ये आपका एफ फंक्शन 1 होगा ही होगा. ओके, और सेकंड ये है, अगर सेम कंपोजिशन अगर आपका ऑन टू है तो इसमें आपका जो जी फंक्शन है वो आपका ऑन टू हमेशा होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसीडर एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एंड इज 1. ओके, आपका क्वेश्चन कह रहा है आपके पास अब यहाँ पे दो कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन है. अगर आप उन दोनों फंक्शन अगर आप कंपोजिशन करते हो, कंपोजिशन कैसे करना है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ, तो वो 1 होना चाहिए, 1 होगा. तो क्या उस कंपोजिशन के दोनों फंक्शन 1 हो, ऐसा ज़रूरी है? तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें आप जैसे आप इस नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नोट का यूज़ करो. देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है अगर जी ऑफ एफ कंपोजिशन फंक्शन आपका 1 है, तो ऐसा क्या कंपलसरी है एफ और जी हमेशा आपका 1 हो? तो आप एक ऐसे एग्जांपल लेके दिखाओ जिसमें एक फंक्शन आपका 1 हो और एक फंक्शन आपका 1 ना हो, और उन दोनों फंक्शन का अगर आप कंपोजिशन करो, अगर वो फंक्शन हो गया तो जो आप कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहे हो वो ट्रू हो जाएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे केस, एंड वो केस है आपका आइडेंटिटी फंक्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइडेंटिटी फंक्शन हम लेंगे तो आपको पता है आपके दो सेट्स आप लेते हो. एक आप सेट लेते हो एफ ए टू बी, एंड सेकेंड सेट आप लेते हो जी डैट इज बी टू सी, जैसा हमने स्टार्टिंग अपने इंट्रोडक्शन में किया था. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, एंड दिस इज योर सेट सी. ओके, अगर मैं बात करूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, तो आपको पता है इसमें फंक्शन कहाँ से, ए से बी में है. मान के चलो आपका फंक्शन एफ यहाँ पे क्या है, 1 है. तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 डिफाइंस व्हाट, 1 सेज ईच एलिमेंट इन ए
have a different image in B, or you can say have a different image in codomain. Okay, so अगर मैं बात करूँ B to C, तो B to C हमारा कौन सा फंक्शन है, that is G of X. तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मैप करूँगी ताकि आपको दिखे कि F आपका 1 1 है बट G आपका 1 1 नहीं है. तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मैप्ड कर लेती हूँ. तो क्लियरली स्टूडेंट्स ये आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 बोलता है ईच एलिमेंट इन डोमेन हैव अ डिफरेंट और आई कैन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन योर कोडोमेन. सो दिस इज क्लियरली नॉट ऑन टू फंक्शन. आपने इसमें क्या बताया, एफ आपका 1 1 है बट जी आपका 1 1 नहीं है. अगर आपने प्रूव कर दिया जी ऑफ एफ बी अगर आपका 1 1 है, तो जो आपने कंडीशन ली है और जो आपका ये नोट मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था ये बिल्कुल ट्रू होगा. ओके, सो आपको पता है ये बहुत इजी है इसको देखना कि 1 1 है कि नहीं. ओके, एफ़ की बात की है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ़, तो आपको पता है इसे कैसे लिखना है, जी एफ ऑफ एक्स. ओके, सो इस f के साथ यहाँ पे क्या x कहाँ से एलिमेंट्स लेने हैं, फ्रॉम योर डोमेन. एंड डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4. सो 1 बाय 1 हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. एंड आपको इतना भी पता है कि g से f मतलब g कंपोजिशन ऑफ f के लिए आपको अपने एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स की तरफ देखना पड़ता है, फ्रॉम योर a टू c. इट मीन्स a के सारे एलिमेंट्स, ए आपका डोमेन है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज अगर आपको आपके कोडोमेन में मिल जाती है तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा. क्लियरली स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इफ यू पुट x is equals to 1, okay, so your f of 1 and your f of 1 is what, your f of 1 is 1, so you will write g of 1 and g of 1 is 1 is equal to 1. बिल्कुल ट्रू हो गया. 1 के लिए आपको डिफरेंट इमेज मिल गई है. नेक्स्ट आप अब देखेंगे g of 2 के लिए. अगेन f of 2 is what, 2, f of 2 is 2 and g of 2 is what, 2. बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है इस कंडीशन को. अगेन इसमें आप दिस इज योर थर्ड एलिमेंट 3, सो f of 3 gives you 3, so g of 3 is also gives you 3. Again distinct element for your element this. And last one is f of 4. f of 4 कैसे हो जाएगा, f of 4 gives you the image 4 and g of 4 gives you a image 4. हमने बस इन 4 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है. अगर इन 4 एलिमेंट्स की अगर आपको इमेज मिल जाती है और वो इमेज अगर डिफरेंट है, सो यू कैन से दैट योर g of f is 1 1. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.